Hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we will be discussing about the static GK. I hope you are aware that from on Wednesday and Thursday at 9 p.m. we discuss the static GK uh, and which will be important for the next year. Even this year, if you are attempting any exam or let's say CLAT, CUET or any other examination where the GK or static GK is asked, this class would be quite beneficial for you. So am I audible and visible? Okay, yes, good evening, Ayush. Fact is done. Good evening. Let us begin. So, in today's class, we'll be discussing questions from history and CRT book. Okay, class 12th and CRT book because these are asked in CUET, SLAT, ALAT, CLAT. कई जगह पूछा भी जाता है ये सब questions, so that is why you should be knowing about it. So, let us begin with the first question of the day. So, the first question says the Permanent Settlement Act was passed in which year? 1791, 1793, 1757, 1787. What is the right answer? So this was a law which was yes, yes. Ayush, you are right. A is the people are saying A. No, not A. Actually, the right answer is B. 1793. Okay, and this was a land revenue settlement. Land revenue settlement in the state of कौन से region में था ये? Yes, now Ayush, you are right. B is the right answer. Land revenue settlement in the state of Bengal. Okay. So this you should be knowing. B is the right answer to this question. Now, when we are talking about the Permanent Settlement Act, which came in the year 1793, this came during the Governor General. Who was the Governor General? Yes, Bengal में था. Yes, Ayush, you are right. आपको ये बताना है कि who was the Governor General of India at that time when this Permanent Settlement Act was came up? Lord Hastings, Lord Cornwallis, Wellesley, Lord Lytton. What is the right answer to this question? So I'm waiting for you all to answer this question. Which Governor General? Yes, the right answer is option B, Lord Cornwallis. Yes, Ayush, Nasha, you're right. So B is the right answer to this question. ठीक है. East India Company had fixed the revenue of each zamindar and all. ठीक है. So यहाँ पे आप देखो ये वाला जो रीजन है एक्चुअली क्या है जैसे आज जो बंगाल इतना सा है बट उस टाइम पर बंगाल का मतलब दिस रीजन वाज कॉल्ड एज बंगाल है ना. So which included modern day West Bengal, Odisha, Jharkhand, Bihar, Bangladesh, Meghalaya. So this is called as Bengal region. Okay, so the right answer is B. Yes, Mishika, Ayush, you are right. B is the right answer to this question. ठीक है. तो ये बुक में डिस्कशन है परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 का. दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. इसको ना एक और टर्म दिया था ना, कहते थे जमींदारी सेटलमेंट आल्सो, है ना. जमींदारी सेटलमेंट. And that is why the concept of zamindar even still you will find the concept of even Bihar, UP में UP में Bengal, Jharkhand में you will still find the concept of zamindar. ठीक है, आज भी कुछ हद तक कुछ traces मिलेगा उसका. And the original is actually zamindari settlement. That is what is being talked about. So B is the right answer. Now let us move on to the next one. Which of the following is called as sunset law? Permanent Settlement Act, Regulating Act, Pitt's India Act, none of the above. What is the right answer to this question? सनसेट लॉ किसको कहते थे? And why? Can you please tell me the reason why? Yes, Ayush, Nasha, you are right. A is the right answer. एक्चुअली परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को ही जो है सनसेट लॉ कहते थे. ठीक है, वाई? बिकॉज जो टैक्सेस दिया जाता था तो एक्चुअली होता क्या था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट में ना, एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेंटल का फिक्स अमाउंट 10/11 ऑफ रेंटल कहते थे, एक फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स देना होता था गवर्नमेंट को. ठीक है, ओके, ठीक है. अब आप समझो, जब एक फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स देना होता था प्लस फिक्स डेडलाइन होता था.
ठीक है, yes, A is the right answer. Yes, Ayush, facts, then you are right. Very good. फिक्स्ड टैक्स प्लस फिक्स्ड डेडलाइन होता था, ठीक है। तो फिक्स डेडलाइन का मतलब है उसमें लिखा होता, मान लो फॉर एग्जांपल लिखा है कि 31 दिसंबर को आपको टैक्स देना है, तो 31 दिसंबर को सनसेट से पहले टैक्स दे देना है, ये मतलब हुआ। So if it is written that you have to give this year's tax on 31st December, I'm just giving an example to explain. So it means that by the end of sunset, मतलब 31st December के sunset से पहले आपको दे देना है, ठीक है। You have to give the tax before the sun sets on 31st December. So that is why it was also called as sunset law, ठीक है। और अगर सनसेट तक नहीं आया पेमेंट, देन ऑफ कोर्स जमींदार वर लायबल टू बी ऑक्शन्ड एंड ऑल। तो जमींदार की जो जमीन है, दे कैन बी स्नैच्ड एंड ऑक्शन्ड बाय द ब्रिटिश एंड ऑल, ठीक है। सो दिस इज द अल्टीमेटम एंड ऑल। तो ये आपको पता होना चाहिए अबाउट दिस सनसेट लॉ। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Yes, Patterson and Ayush are saying A. अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही एक्चुअली बताया कि परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट में जो टैक्स रेवेन्यू होता है वो फिक्स्ड होता था, ठीक है। और वो चेंज नहीं होता था। ये वाला जो है, ये रैयत वाली सेटलमेंट के इसमें ना, है ना। तो ये आपको बताना चाहिए। ए इज द राइट आंसर। यस आयुष, मिशिका, यू बोथ द राइट फैक्ट्स एंड यस, ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, है ना। they were classified as zamindars where had to pay a demand of fixed in perpetuity, हमेशा के लिए एक fixed amount आपको देना होता था ना। So this you should be knowing it. So yes, let's move on to the next one. Which of the following term was very near meaning that of zamindar mentioned in the NCERT book? Talukdar, Raja, Jotedar, both A and B. What is the right answer to this question? ओके, सो एक्चुअली द राइट आंसर इज डी। मतलब दोनों जो है, राजा और तालुकदार दोनों जो है जमींदार के इक्विवेलेंट है, मोर और लेस, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, जोटेदार जो होते थे वो जूनियर होते थे, मतलब जमींदार वर मोर पावरफुल, ठीक है। सो जोटेदार वर रिच रैयत, रैयत मतलब जो डायरेक्ट शेयर क्रॉपर्स फार्मर्स हुए, ठीक है। तो जमींदार भी वर्ड यूज किया गया है कहीं पर उनके लिए राजा वर्ड यूज किया गया है और तालुकदार वर्ड यूज किया गया। सो रफली मोर और लेस आर नियर टू द मीनिंग ईच अदर, ठीक है। जो थे डास पर एक्चुअली जूनियर्स, मतलब जूनियर इन द सेंस के रिच रैयत्स को, जो थोड़ा सा फार्मर्स जो थोड़ा पावरफुल हो गए, दैट वेयर दे वर कॉल्ड एज जोटेदास, बट स्टिल दे वर अंडर जमींदास। दिस मैप इज देयर इन एनसीईआरटी बुक, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट, ठीक है। Okay, let's move on to the next one. These are mentioned in NCERT book. The term amla during the British time was used for what? Zamindar, Jotedar, officer who used to come to collect rent, district collector. What is the right answer? Yes, the right answer is actually C. And V. Sharma and Mishika have answered correctly. Very good. So आमला जो है, तो एनसीईआरटी में सब बुक में मेंशनड है, ठीक है, हिस्ट्री की बुक में। The term rent of collection and officer zamindar used the term amla came around the village, है ना। So these were the an officer of zamindar who used to come to the village to collect the taxes and all, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। C is the right answer to this question. Let us move on to the next one. The next question is adhyars or bargadars are the term used during the British time for what? Sharecroppers, landlords, British officers, army men. What is the right answer? I'm expecting everyone to answer.
यस, पीर शर्मा एंड मिशिका सेड ए, यस, शेयर क्रॉपरी के लिए यूज किया था, ठीक है। बरगदार्स, अधियार्स, बरगदार वर्ड सुना होगा आपने कभी। शेयर क्रॉपर मतलब जो एकदम डायरेक्टली जो पीसेंट होता है, एकदम पीसेंट्स विच आर वर्किंग इन द फील्ड, and which were actually employed as a labor by the zamindars or by the rich people and all, तो वो शेयर क्रॉपर्स होते थे। यस, तो आप देख सकते हो कभी कभी उनके पास अपनी जमीन भी होती थी। A large part of the land was cultivated through sharecroppers, तो ये एक तरीके they were laborers कह सकते हो, ठीक है। Adhyars or Bargadas who brought their own plus labor in the field and handed over half of the etc and all, ठीक है। So ये आपको पता होना चाहिए। A is the right answer. Let us move on to the next one. The next question is in front of you. Please read and answer. देखो EEIC के बारे में बता देते हैं। इसका मतलब है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। Eliminated the rest and colored. B ज्यादा पॉसिबल। मैकाले रिपोर्ट 1813 में थोड़ी आई थी, वो तो बाद में थी। पील कमीशन क्या चीज के लिए, अच्छा बताइए। चलो आप चारों को एक्सप्लेन कीजिए, इसमें से चारों में किसको कौन कौन सा आपको पता है, प्लीज टेल मी। कोई पता है चारों में से किसी एक के बारे में भी? नॉट श्योर। ए, देखो अब मैं बताता हूँ, बिकॉज ये सब ऐसे भी पता होना चाहिए, बिकॉज दीज आर वेरी। मैं कॉलेज रिपोर्ट तो इंपॉर्टेंट, इवन करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉर्ड मैकाले कह सकते हो, इवन एजुकेशन से रिलेटेड। यस नाम है। देखो 1833 में मैकाले फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया था। यस, ये तो बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, क्लैट रिलेटेड पूछते हैं। फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 1833 या 35 के आसपास, आप एग्जैक्ट देख लेना। एज फार एज आई रिमेंबर 35 में, ठीक है। सो लॉर्ड विलियम बेंटिक के जमाने में इनफैक्ट इन्होंने ही रिकमेंड किया था, जो बाद में 1860 में इंडियन पेनल कोड बना, क्योंकि अभी रिसेंटली चेंज होकर बीएनएस बनाया गया। तो मैकेलर रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इट टॉक अबाउट एजुकेशन आल्सो। यस, तो अगर आप कह रहे हो कि एजुकेशन से रिलेटेड है तो ठीक है, यू आर राइट। हाँ, ठीक है। Then it also talked about changing the official language from Persian to English. तो 1937 में फिर official language change हो गया। Peel Commission related with what? Because I think चारों important है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हंटर इज एजुकेशन एंड जलियांवाला बाग। वेरी गुड वीर शर्मा। हंटर एजुकेशन दो बनाई गई थी, एक 1882 के आसपास बनाया गया था, एजुकेशन से रिलेटेड था, और एक जलियांवाला बाग मैसेकेयर के बाद बनाया गया था। उसने क्लीन चिट दे दिया था जनरल डायर वगैरह को। ओके, पील कमीशन 1857 म्यूटिनी। वेरी गुड वीर शर्मा। एक्चुअली हुआ ये था कि जब 1857 म्यूटिनी हुआ था, रिवॉल्ट ऑफ 1857, उसके बाद हुआ ये था कि बिकॉज दे हैड सीन कि रिवॉल्ट विद इन द आर्मी हुआ था, ब्रिटिश आर्मी के, उसमें बहुत सारे इंडियंस थे जिन्होंने रिवॉल्ट किया था। सो दे रियलाइज दैट दे नीड टू रीस्ट्रक्चर एंड रीऑर्गेनाइज द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, and in fact they recommended that there should be more white officers or European officers or British officers. रेशियो शुड बी मोर। पहले क्या होता था, रेशियो कम होते थे, व्हाइट ऑफिसर्स कम होते थे, ज्यादातर लोअर रैंक में मोस्टली इंडियंस वर देयर, बट दे रिकमेंडेड दैट देयर शुड बी मोर, है ना, व्हाइट ऑफिसर्स एज कंपेयर टू इंडियंस इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। ये पील कमीशन में, ठीक है। सो लास्ट बचा तो फिफ्थ रिपोर्ट आई थी 1813 में, एंड इट टॉक्ड अबाउट इट कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली एंड ऑल। तो इसके बाद हुआ ये था कि जब ये रिपोर्ट आई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसके बाद ऐसा इनफैक्ट ऐसा हुआ भी, आई होप यू आर अवेयर, 1813 में, है ना, चार्टर एक्ट पास हुआ। मैं बता देता हूं, 1813 में चार्टर एक्ट पास हुआ, अंडर विच इट इज सेड कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैन डू ट्रेड विद इंडिया एंड चाइना ओनली, है ना, एंड देयर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। कुछ उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी कि देखो यहाँ लिखा होगा, हाँ, ओवर अपोज टू द मोरबी दैट ईस्ट इंडिया हैड ओवर ट्रेड विद, हाँ, मतलब उसके बाद क्या हुआ,
है ना, कि शुरू में तो ये आया कि चलो ठीक है आप चाइना और इंडिया से ट्रेड कर सकते हो, उसके बाद क्या 1833 में सारा एक्सेप्शंस वगैरह हटा दिया गया, एंड उसके बाद क्या सारी मोनोपोली खत्म कर दी गई, बिकॉज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ प्राइवेट कंपनी विच वेर गिवन मोनोपोली टू ट्रेड इन इंडिया एंड चाइना। मोनोपोली का मतलब होता है कोई और प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती, नो अदर प्राइवेट कंपनी ऑफ इंग्लैंड कैन डू द ट्रेड विद इंडिया एंड चाइना, ये था। फिर 1833 के बाद पूरा अबॉलिश कर दिया गया, एंड ऑफ कोर्स नाउ इवन द अदर प्राइवेट कंपनीज कैन आल्सो कम एंड ऑल, ठीक है, तो मोनोपोलीज के अगेंस्ट था ना, ठीक है। तो आई होप यू गॉट इट, वो बी इज द राइट आंसर, इट्स मेंशन्ड है ना, फिफ्थ रिपोर्ट के नाम से बहुत फेमस है, and many people actually in England protested कि why they are given monopoly and all, why not other companies and all, ठीक है, benefiting only the English East India Company but not even the British government and all, ये सब बात हुई थी। इससे खाली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा हो रहा है बंगाल कैप्चर के बाद, ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं फायदा हो रहा है, वो एक तरह से प्राइवेट कंपनी है, उसके पास उसको सारा बेनिफिट हो रहा है ना, एंड इनफैक्ट इट हैड इट्स ओन प्राइवेट आर्मी, वो इतनी पावरफुल थी कि उसकी एक प्राइवेट आर्मी थी और कई सारे किंग्स को हरा देते थे। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यस, वीर शर्मा में का नाम यही वाला राइट, डी। संथाल सरीवन ट्राइब अगर आज भी जानते होगे तो आप, आई होप यू आर वेयर झारखंड ओडिशा रीजन, यू विल फाइंड इट, दे आर ट्राइबल्स लिविंग इन प्लेन्स वेयर पुश्ड बाय ब्रिटिश टू रीच टू द स्लोप ऑफ द हिल्स, मतलब ऊपर चढ़ने के लिए ना, नीचे रहते थे तो ब्रिटिश ने पुश किया कि आप ऊपर जाइए, ठीक है, देयर वर रीजंस फॉर इट एंड दे यूज्ड ग्लव्स एंड ऑल, सो डी इज द राइट आंसर। तो ये इनफैक्ट एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड भी है, एंड इनफैक्ट आई होप यू आर अवेयर। Can you please tell me a person belonging to a personality, very famous personality belonging to Santhal tribe at a very important constitutional post today? कोई बता सकता है? Yes, President of India, right? हाँ, वीर शर्मा नाम है, great. हाँ. Okay, yes. The next one is the next. Where is Damane Ko? This is also mentioned in the book. Yes, मिशिका आपने भी सही बताया था, द्रौपदी मुर्मू। हाँ, दामने को इज एक्चुअली कहाँ मिलेगा? इट्स एक्चुअली मेंशन देयर, ए इज द राइट आंसर। आपने संथाल रिवॉल्ट पढ़ा होगा, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, बहुत फेमस है। दामने को इज रीजन नॉर्थ ईस्ट झारखंड में मिलेगा आज के जमाने में, मतलब उस टाइम पे बंगाल था, मैंने बताया नहीं, बंगाल उस टाइम में काफी बड़ा होता था, सो टुडे यू विल फाइंड इट मोस्टली इन द स्टेट ऑफ झारखंड, this region, so A is the right answer. Yes, Mishika, you're right, and so A is the right answer to this question. Yes, which NCERT class as far as I remember 12th की NCERT होगी, ठीक है, so A is the right answer to this question, ठीक है। The Santhal which revolted happened, the revolt happened in the year, कब हुआ था? पीजेंट्स, जमींदार्स एंड टाउन्स करके एक चैप्टर होगा एनसीईआरटी में, देखिएगा, एज फार एज आई रिमेंबर 12th क्लास की एनसीईआरटी में, ठीक है, उसी में से मैंने दिया। द संथाल रिवॉल्ट हैपेंड इन द ईयर, यस हर्षित, वेरी गुड, 1855, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया। एंड लीडर कौन थे? मिशिका, यस, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी ये सब क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी बुक से, सीयूटी वगैरह में ऑल, तो सिद्धू है ना, मनी लेंडर्स है ना, दे एक्चुअली रिवॉल्टेड अगेंस्ट मनी लेंडर्स एंड ऑल, तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव है ना, ये चार लोग थे, सो बी इज द राइट आंसर, ओके, है ना। तो आज जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया नहीं, पूरा हिस्सा जो है वो पहले इतना बड़ा हिस्सा को बंगाल कहते थे, ठीक है।
एंड आज जो है ऐसा कुछ झारखंड है, तो ये वाला नॉर्थ ईस्ट ऑफ झारखंड मिलेगा, ये राजमहल, दमन को सब ये मिलेगा, ठीक है, दमन को रीजन, ठीक है. सो जस्ट हैव एन आइडिया बिकॉज इट वाज इन द न्यूज. The land revenue settlement in Bombay and Madras presidency were known as what? देखो जमींदारी या परमानेंट सेटलमेंट तभी बताया बंगाल रीजन में, इसके चांसेस कम है कि वही हो. मालवारी पंजाब, यस वीर शर्मा, वेरी गुड, मालवारी पंजाब रीजन में था, ठीक है. तो रैयत वारी इज द राइट आंसर. यस वीर शर्मा, मिशिका, यू आर राइट. रैयत कौन है? तो वही शेयर क्रॉपर्स जिनकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, रैयत या शेयर क्रॉपर्स. तो इनसे डायरेक्टली टैक्स वसूला जाता था. सो देयर वाज नो जमींदार और मिडलमैन हियर. सो ब्रिटिश डायरेक्टली यूज्ड टू डू द डील विद रैयत्स एंड दे यूज्ड टू टैक्स. और ये इनका जो टैक्स सिस्टम था, एवरी 30 ईयर्स टैक्स को रीअसेस किया जाता था और मोस्टली बढ़ा ही दिया जाता था 30 ईयर्स के बाद. ऑफ कोर्स दे विल नॉट रिड्यूस इट बिकॉज ऑफ कोर्स फॉर ऑब्वियस रीजंस, है ना. 1820 में लाया गया था, है ना. ओके, सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट, है ना. तो ये वाला ये जो हिस्सा था ना, ये इसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहते थे, महाराष्ट्र गुजरात मिला के बॉम्बे प्रेसिडेंसी. इनफैक्ट नॉट ओनली दैट, जो सिंध वाला भी कुछ एरिया था, यहाँ पे यमन में एडन जगह थी, वो भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट माना जाता था. सिमिलरली ये वाला हिस्सा जो है, इसको मद्रास प्रेसिडेंसी माना जाता था. द मॉडर्न डे तमिलनाडु रीजन एंड सब पोर्शन ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है. सो दिस यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अमेरिकन सिविल वॉर हैपेंड. अब आपको लग रहा हो सर अमेरिकन सिविल वॉर से इसका क्या लेना देना, बट यस, इट इज मेंशन द सेम चैप्टर एंड इट हैज सम लिंक with India's history. American Civil War happened between, Civil War मतलब क्या होता है? गृह युद्ध, war between the two groups in the same country. अपने ही मुल्क में दो ग्रुप आपस में लड़ने लगे, उसको कहते हैं सिविल वॉर. And can you please tell me what was the reason behind it? Yes, Veer Sharma and Mishika is saying B, 1861 to 65. North versus the Confederacy. Yes, Veer Sharma, but what was the reason? क्यों North versus South? Northern states versus Southern states war हुआ था. For reason, for what reason? Slavery. Great, very good. Because of slavery issue. So B is the right answer. And slaves, yes, abolition of slavery, yes, Veer Sharma, Mishika, right. अच्छा, जैसे ही अमेरिकन सिविल वॉर एंड हुआ था, उसी टाइम पर a very popular person had to die. They were fighting whether to continue slavery or not. Yes, and around 1865, a person had to lay down his life. A very prominent personality in America. Who was that person on this issue? I mean, he was killed. He was assassinated. Yes, Abraham Lincoln. Right, Veer Sharma. ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर. अच्छा, एक सवाल है, जैसे ये नॉर्दर्न स्टेट्स था, मान लो मैं रफली बता रहा हूँ, ये सदर्न स्टेट्स था, ठीक है. सो ये नॉर्दर्न स्टेट्स है ना. ओरिजिनल 13 कॉलोनीज इधर ही था ना, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ, ये यूएस हुआ आज का पूरा टोटल. एंड दिस सदर्न स्टेट्स बिकॉज ओरिजिनली जो है जो 13 कॉलोनी से वो ईस्टर्न कोस्ट में ही था. आई होप यू आर अवेयर, ठीक है. तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि जो नॉर्दर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स है, उसमें विच वेर सपोर्टिंग स्लेवरी, विच वेर अपोजिंग इट इन सिविल वॉर? कैन anyone tell me? So northern states were opposing it, ठीक है, and southern states were supporting it, ठीक है, ठीक है.
नहीं, नाम नहीं बताना है, कौन से स्टेट सपोर्ट करते थे, नॉर्दर्न स्टेट्स अपोज कर रहे थे और सदर्न स्टेट्स जो है सपोर्ट करते थे, बस इतना बताना था। नॉर्दर्न सपोजिंग, सदर्न सपोर्टिंग, हाँ यस मिशिगा राइट, हाँ। खैर, तो फाइनली जाकर के 13th अमेंडमेंट बहुत पॉपुलर है, 13th अमेंडमेंट ऑफ यूएसए, दिसंबर 1865 में जाके स्लेवरी एंड हुआ, ठीक है। और उसकी वजह से एंड फाइनली जस्ट बिफोर द दिस एक्चुअली ही हैड टू ले डाउन हिज लाइफ, अब्राहम लिंकन वाज किल्ड बाय जॉन विल्केस बूथ। इट्स वेरी पॉपुलर एंड ऑल, यू शुड बी नोइंग अबाउट इट, है ना, ठीक है। एक चीज मैं बता रहा हूं, अच्छा फर्स्ट यू आंसर दिस क्वेश्चन देन आई विल एक्सप्लेन व्हाई आई वाज डिस्कसिंग अबाउट दिस। डेक्कन राइट्स कमीशन वाज प्रेजेंटेड इन द ईयर, देयर इज अ रीजन व्हाई आई टॉक्ड अबाउट सिविल वॉर, उसका कुछ वजह है जो इससे लिंक्ड है, एनसीईआरटी में मेंशन है। सो डेक्कन राइट्स कमीशन वाज प्रेजेंटेड इन द ईयर व्हेन 1875 ना, 1878, सो सी इज द राइट आंसर। देखो एक्चुअली क्या हुआ था, 1878, सो सी इज द राइट आंसर। 1875 में डेक्कन राइट्स हुआ था और 3 साल बाद उसकी कमीशन की रिपोर्ट आई। अब आप समझोगे क्यों, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट, सो लेट मी फर्स्ट डिस्कस, तो ये आपको समझ में आएगा। देखो अमेरिकन सिविल वॉर कब से कब तक हुआ, 1861 से 65, ठीक है। अब गौर से देखना, देखो यहाँ पर इंग्लैंड है, इफ यू आर एबल टू सी, यूके, एंड दिस इज यूएसए, ठीक है, एंड दिस इज इंडिया, ओके। नाउ इंग्लैंड को बिकॉज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आया था, 1750 से ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना शुरू हो गया था, है ना, इंग्लैंड में। सो वी हैव सीन cities like Manchester and other cities where clothing was cloth manufacturing होता था, but they needed cotton as a raw material, उनको कॉटन रॉ मटेरियल चाहिए होता था, तो वो अमेरिका से ले जाते थे। यहाँ पे 13 कॉलोनीज था, उनको यहीं से उठा के ले जाते थे बिकॉज अमेरिका में काफी था और ये शॉर्ट भी था रूट, है ना, सो दैट वाज वेरी इजी फॉर देम। नाउ जब अमेरिकन सिविल वॉर हुआ इस दौरान इन 1861 to 65 व्हेन वी हैव सीन अमेरिकन सिविल वॉर, नाउ व्हाट हैपेंड वाज ड्यूरिंग दिस टाइम यहां से ले जाना मुश्किल हो गया, सो द ब्रिटिश स्टार्टेड बाइंग फ्रॉम इंडिया, खास के साउथ इंडिया में, बंगाल, बॉम्बे, महाराष्ट्र रीजन में यू विल फाइंड ब्लैक सॉइल व्हिच इज पॉपुलर फॉर कॉटन कल्टीवेशन। तो क्या हुआ कि यहाँ बूम हुआ, सो तो यहाँ पर हालात अच्छे हो गए, सो द फार्मर्स बिकम वेरी वेल्दी, गुड इनफ एंड ऑल, ठीक है। उससे क्या हुआ कि दे वर एबल टू पे बैक द लोन्स, एवरीथिंग वाज गुडी गुडी। लेकिन जैसे ही 1865 में द मोमेंट एक्चुअली द सिविल वॉर एंडेड, तो ये खत्म हो गया, so they started again buying from America instead of buying from India because it was long, जाहिर सी बात है वो पास में पड़ता था ना। उसके बाद जैसे 1865 के बाद जब ये हुआ, so of course when actually the demand went down in the state of this region, Maharashtra region and all, a lot of financial crisis started happening 1865 के बाद। और जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस होता है उसी से जो है ना राइट्स, वायलेंस सब होता है। so 1875 में द राइट्स, 1875 Deccan riots is very famous. Deccan means South India, in Pune, Ahmednagar, Maharashtra region. And the reason was actually because there was conflict. The peasants used to have conflict with the money lenders because they were not able to pay back the loans. ठीक है, हाँ, तो वो कर्जा नहीं लौटा पा रहे थे, ठीक है, चूंकि उनके पास बचा ही नहीं था, उनका सेल ही नहीं हो रहा था। सो दैट इज व्हाट द रीजन इज एंड ऑल, ठीक है। सो इस रीजन में अगर आप अभी भी जाके देखोगे तो ये वाला रीजन है यहाँ पर, और यहाँ पर ब्लैक सॉइल बहुत पाया जाता है, ब्लैक सॉइल या रेगर सॉइल कहते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर कॉटन कल्टीवेशन, ठीक है। दिस यू शुड बी नोइंग अबाउट। Okay, so we are ending this class here and we'll meet you next class tomorrow at 9 p.m. है ना। So this is all about today's class. Thank you everyone. Sir, how to do ALET GK focus? Anuj, please first you should see 3 से 5 साल का PYQ solve कर देना ALET और CLAT के लिए भी, because they actually repeat and all. So first thing you do this. बाकी मैंने रिविजन classes कराई है, I have done a lot of revision classes, so there is a playlist where revision of current affairs has been done, so go and watch that,
ठीक है, और नेक्स्ट वीक भी विल बी हैविंग सम लॉट ऑफ रिविजन सीरीज. मैं कुछ नया भी सोच रहा हूँ, थिंकिंग टू कम अप फॉर बोथ CLAT and NELET. Thank you everyone, thanks for watching, have a nice day.